Hello everyone, welcome to MBA Karo. So I hope I'm live and audible to you. Just give a show of hands who are present for this session. Okay, although XAT is most of you would be preparing for XAT after CAT only. They have launched their official mock test, and today, they launched it today, and it will be available for one more day. They had launched XAT mocks previously as well. I think last month भी उनने launch किया था. Okay, so the thing is, in this video I'm going to solve the XAT mock, the official mock which they have launched. कि आप में से कितने लोगों ने mock attempt किया है? Just let me know in the comments कि आपने अगर attempt किया हुआ है mock तो, so that I get to know कि. Okay, I hope the screen is visible now. क्योंकि पहले शायद वो black आ रहा था. आप में से किसी ने मॉक दे दिया ऑलरेडी और आर यू येट टू गिव दिस मॉक? तो एक्चुअली ये तो प्रीवियस ईयर पेपर्स के ही क्वेश्चंस देते हैं. but let's see that how it is. Like पहली बार जो था तो I saw the mock, I did not attempt, but there were requests from several students that how to go about solving XAT mocks. ठीक है, तो XAT का एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि like there are different people with different स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. इट सो दैट में आपके पास 170 मिनट्स होते हैं. ठीक है, 170 मिनट्स में यू हैव टू अटेम्प्ट VALR. then you have decision making and quant. The number of questions in DM is 21, 26 and 28. So total 75 questions होते हैं. Now the ideal time distribution, now it depends from person to person. Total 170 minutes आपको मिलेंगे. 10 minutes का जीके का अलग से टेस्ट होता है. जीके is not counted. ठीक है, वो स्कोर में काउंट नहीं होती, परसेंटाइल में काउंट नहीं होती, अलग से they use it for some other use which is not known, like what how exactly they use it, but you must score like okayish in that GK aspect as well, right? So this is the duration. And if I talk about the split, तो टिपिकली क्वांट में आपको 80 मिनट्स लग जाएंगे. ठीक है, क्वांट लेंदी होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है. और मे बी आई कैन से 40 एंड 50 मिनट्स, दिस इज टिपिकली द स्प्लिट. अब ये वेरी करता है, राइट? हो सकता है कि कोई वर्बल में अच्छा हो तो उसे वो 60 मिनट्स खींच सकता है. ठीक है, और कोई से 40 टू 45 मिनट्स कर लेगा. एक तो यहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, 40 45 50 टू 60. अब ये 80 टू 90 भी जा सकता है. ये तो किसी सेक्शन में आप लाइक कम ज्यादा कर सकते हो. लाइक हो सकता है कि आप वर्बल 40 मिनट्स में कर लो, अगर आप क्वांट में अच्छे तो आप वर्बल कम अटेम्प्ट करो, या फिर डिसीजन मेकिंग में टिपिकली लोग टाइम स्पेंड करते हैं अराउंड 40-45 मिनट्स. क्वांट एंड वर्बल कीप्स चेंजिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. हो सकता है कोई क्वांट में सिर्फ 65 मिनट्स लगाए, बाकी उनके दो अच्छे हैं तो उसमें आराम से बैठ के पेपर अटेम्प्ट करे. सो दे कीप द numbers keep changing. I typically spend 50 40 80. Okay, because I believe कि I am able to solve, if I dedicate time I should be able to solve all the questions. तो ये मेरी philosophy रहती है, इसलिए मैं ये टाइम स्पेंड करता हूँ, राइट? अब अलग अलग है कौन से स्टार्ट किससे करना चाहिए, ये लोग भी पूछते हैं कि कौन से सेक्शन से स्टार्ट करना चाहिए. आई ऑलवेज से दैट स्टार्ट विद योर स्ट्रॉन्ग सेक्शन. ठीक है, इसमें बहुत टाइम रहता है, कोई ऐसा पैनिक वाला सिचुएशन नहीं बनती, बिकॉज इट्स अ मैराथन. इट्स नॉट कि लाइक कैट में सेक्शनल टाइमर है चला जाएगा, या फिर कोई दूसरा एग्जाम है जिसमें कम टाइम होता है. यहाँ पे टाइम एम्पल रहता है. जस्ट दैट लाइक यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट एंड नॉट गेट टायर्ड. इसमें एंड्योरेंस का गेम है, आपको लंबे समय तक बना रहना. 3 घंटे एग्जाम में बैठना होता है, दैट टू इन विंटर्स. लाइक सो इट्स अ चैलेंजिंग टेस्ट. ठीक है, ड्रेनिंग टेस्ट होता है काफी. सो स्टार्ट आपके स्ट्रॉन्ग सेक्शन से होनी चाहिए, राइट? सो लेट्स सी दिस. लेट्स स्टार्ट द टेस्ट. ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, ओपन दिस सो दैट आई कैन डू द रफ वर्क हेयर. So let's start. Just comment start in this chat and I will start the test. ओके, सो आपको क्या करना है, आपको लॉग इन करना है. अगर आपने जेड के लिए रजिस्टर कर लिया, यहाँ पे डैशबोर्ड में ऑप्शन आएगा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कंप्लीटेड, और यहाँ पे मॉक टेस्ट आएगा. तो मॉक टेस्ट में आपको क्लिक करना है.
So I hope the mock test is complete one, not like the cat one. Okay, okay, so ये launch हो जाएगा. So it gives you 3 hours का duration इसमें पूरा दिया है इनने instructions में, and then all right. So all those uh, typical instructions की write करने पे आपको ऐसे करना है and all. Okay. अच्छा, ZAT में एक मार्किंग स्कीम होती है. ठीक है. ZAT की मार्किंग स्कीम में टिपिकली क्या होता है कि आपके पास लाइक 180 जो आपका मार्किंग स्कीम होती है, जो +1 Z की मार्किंग भी पता होनी चाहिए कि फॉर करेक्ट आंसर इट इज +1, इनकरेक्ट -0.25 और -0.1 आफ्टर 8th क्वेश्चन. अभी आपको इतना सब ये नहीं सोचना कि आफ्टर 8th क्वेश्चन कैसे कैलकुलेट होती है, वो सब कैलकुलेशन नहीं लगानी. बेसिकली अगर आप अनअटेम्प्ट करते हो, ठीक है, तो सपोज 75 क्वेश्चन है, 67 या उससे अगर आपने अबव अटेम्प्ट कर दिए तो कोई ये वाली नेगेटिव मार्किंग एप्लीकेबल नहीं होगी. सपोज आपने 65 अटेम्प्ट किए तो क्या होगा कि 67 minus 65 is equal to 2. So 2 into minus 0.1, that will be -0.2. तो ये आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी. अगर मान लो आपने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो 67 minus 50, 17 into -0.1, that will be -1.7 जो आपके स्कोर से हो गए, and it is evenly distributed. Okay. All right. So let's now start this test. I hope you are ready. So let's see this test. Okay, I'm ready to begin kar lete hain, and we will start the test. Okay, so they have given quant only first, and then we have verbal ability and then decision making. I mean, we can do in any format. So quant se start karte hain. If the polynomial x cube plus px plus q has three distinct roots, which of the following is a possible value of p? Okay, so I'll skip this algebra question for now. Yeah, because like I take time to gear up. ठीक है, तो कुछ ऐसे टॉपिक करते हैं जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ. अगेन फंक्शन वाला क्वेश्चन दिख रहा है, स्किप इट, बिकॉज स्टार्टिंग में थोड़ा uh, ऐसे टॉपिक चूज करो जिसमें आपको ज्यादा कंफर्ट लेवल आता है. तो here let's start with geometry. छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है, ABC is a triangle with CAB is equal to 15 degree. Okay, angle A is 15 degrees and ABC is equal to 30. तो ये आपका बन जाएगा 135 degrees. M is the midpoint of AB. M is the midpoint of AB. We need to find angle ACM. Okay, we need to find this angle. So ACM निकालना है. The thing is M is the midpoint. So ये sides equal हो गई 30 and CAB is 15. तो टिपिकली अगर ये लाइक आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है तो ये एंगल्स ये बराबर होते हैं. ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बट ये एंगल छोटा है तो ये एंगल थोड़ा सा बड़ा होगा, ये छोटा होगा. ये दिस विल बी ग्रेटर देन 67.5 से ग्रेटर होना चाहिए. ठीक है, सो अमंग द गिवन ऑप्शंस ACM it will be none of the above. Okay, because it will be greater than 67.5 degrees. अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, बराबर बराबर एंगल होते हैं, ये दोनों स्प्लिट बराबर होता है मिड पॉइंट पे. ठीक है, तो अगर हम ऐसे जाए तो दिस एंगल विल इंक्रीज, सो इट विल बी ग्रेटर देन 67.5. सो नन ऑफ द ऑप्शंस will be there, right? Okay, so again function, let us see कुछ function अगर दिख रहा है. f1 is equal to 3. f satisfies the following properties. f1 is equal to 3, fxy is equal to fx plus y plus fx minus y. Okay, cube plus 2.
f1 is 3, स्टार्टिंग ने पूरी अलजेब्रा भरी है. f of x into f of y is equal to f of x plus y plus f of x minus y. ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है और हमें निकालना है f3. f1 f0 is not 0, so we can do is we can use f of uh, 1 into f of 0. Okay, let us do f of 1 into f of 0, so that like we will put x equal to 1, y equals to 0. Okay, तो इससे क्या हो जाएगा, f of 1 plus f of 1 हो जाएगा. ठीक है, x1 y0 रखेंगे तो f of 1 plus f of 1. Now f of 1 is given as 3. ठीक है, so 3 into f of 0 is equal to 3 plus 3, that is 6. Okay, f of 0 हमारा आ गया 6, नहीं सॉरी 2 आ जाएगा 2. f of 1 is equal to 3. अगर हम यहाँ पे 1 and 1 रखें, so why did we put 0 here? अच्छा, to get f of 0. Now if we put x equal to 1 and y is equal to 1, right? So in that case f of 1 into f of 1 will be equal to x plus y will be 2, f of 2 plus f of 0. ठीक है, तो अब क्या हो गया, f of 0 हमारा निकल गया 2 and f of 1 is 3, so 3 into 3, that is equal to f2 plus f of 0 is 2. ठीक है, तो ये आ गया आपका f of 2 is 7. ठीक है, अब क्या करते हैं, 2 और 1 रख लेते हैं. नेक्स्ट स्टेप वी विल पुट 2 and 1. सो f of 1 is equal to f of 3 प्लस f of 1. ठीक है, तीसरे केस में हमने क्या रखा है, x equal to 2, y equals to 1. So f of 2 is 7. 7 into f of 1 is 3 is equal to f of 3 plus f of 1 is 3. So it becomes 21 and minus 3 18. So f3 will be equal to 18. ठीक है, 18 हमारा आंसर आ गया, दैट इज द ऑप्शंस. ओके, f of 7 पूछ लिया इसने. ओके, सो नाउ दे हैव आस्क्ड, वैसे ऐसा टिपिकली नहीं होता है, एक से एक ही आता है. 2 3 7 18. ओके, 2 3 7 18, ये हमारे f of 0 1 2 और 3 आ चुके हैं. ठीक है, so if we can identify a pattern that would be great. बस f of 7 निकालने के लिए हमें एक काम करते हैं, हम f of 5 निकाल सकते हैं. f of 3 f of 2 is equal to f of 5 plus f of 1. ठीक है, बिकॉज x अगर हम 3 पुट कर दें और y is equal to 2 पुट कर दें, so we can directly find f of 5. So f of 3 is given as 18 and f of 2 is 7, that is equal to f5 plus f of 1. F of 1 is 3. So this is 18 7 is 126 minus 3 120 123 आ जाएगा. ठीक है, अब हम f of 7 रख लेंगे, तो f of 5 into f of 2 is equal to f of 7 plus f of 3 हो जाएगा, अगर हम x equal to 5 और y equals to 2 रखते हैं. ठीक है, हमें अल्टीमेटली f of 7 निकालना है, that is 5 plus 2. Now what we can see is f of 5 is given as f of 5 हमने यहाँ निकाल दिया 123 into f of 2 is 7 is equal to f of 7 plus f of 3 is 18. 123 into 7 minus 18. देखो ऑप्शंस अगर दिख रहे हैं तो बिना कैलकुलेशन के कर लेते हैं, पर ऑप्शंस 1126 होगा आई गेस, या फिर नहीं 1126 नहीं, 123 into 7 is 840
861, 843 आंसर आ रहा है. 843 is the answer. Okay, so that will be the answer. Okay, so function based question, ऐसे दो क्वेश्चन आते नहीं किसी टॉपिक से. Again, algebra, like if something makes you uncomfortable, just move on. Like algebra मुझे typically पसंद नहीं है, so I'll avoid it for now. We'll come back to it later. Starting थोड़ा ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको comfort लगे, थोड़ा पेपर में आपको सही लगने लगे, and that's how you do well on the exam. क्योंकि अगर आप पैनिक वाले सिचुएशंस पहले कर लोगे तो डिस्कम्फर्ट होता है. इन द ट्राइंगल्स ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल. ठीक है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है. पी एंड क्यू लाई ऑन ए डी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली. ए डी में पी है एंड क्यू यहाँ पे ए बी में है. एंड पी ए क्यू एंड क्यू बी सी एंड पी सी डी all have the same areas and BQ is equal to 2. BQ हमें 2 दिया है और इन सब का एरिया सेम दिया है. हमें AQ की लेंथ निकालनी है. ठीक है, एक काम करते हैं. लेट अस से हमें दिया कि PAQ QBC and PCD. PAQ QBC and PCD, all these three triangles have the same area. ठीक है, हमें इसकी लेंथ निकालनी है. अब हम क्या करेंगे, देखो हम लेंथ और ब्रेथ खुद मान लेते हैं. लेट अस से वी नीड टू फाइंड दिस. ओके, AQ को हम x मान लेते हैं. Now I will not take x, I will take 2x. Why 2x? Because area of triangle is half base into height. तो वो half से 2 वाला component कट जाएगा. ठीक है, तो मैंने इसको 2x मान लिया. Right, now I will take this length as 2y और ये वाली लेंथ में ले लेता हूँ 2x plus 2 बन गई इसकी लेंथ. राइट, अच्छा अब क्या है, अच्छा p का भी तो हमें कुछ देखना पड़ेगा कि p कैसे निकलेगा. ऑलराइट, सो लेट्स फिगर आउट. इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस इनटू हाइट. 4y का हाफ यानी कि 2y इसका एरिया हो गया. यानी कि सारे एरिया हमारे 2y हो जाएंगे. ये भी 2y हो जाएगा, तो ये हमारा y हो जाएगा. ऐसे होगा y, बिकॉज इफ यू टेक दिस एरिया इज 2y हाफ बेस इनटू हाइट, सॉरी 2y अपॉन x होगा. y अपॉन x होगा, ये एरिया हमारा y अपॉन x होगा. क्योंकि लाइक इफ यू मल्टीप्लाई हाफ ऑफ 2x into y upon x, the area will be equal to, this will cancel out, sorry, it will be 2y upon x. A to p is 2y upon x, so that area becomes 2y. So area 2y हो गया, तो 2y upon x हो गया. यहां से यहां तक हमारा हो जाएगा, ये पोर्शन हो जाएगा 2y minus 2y upon x. ठीक है, तो ये पोर्शन हो गया 2y minus 2y upon x. And now what we will do is 2x plus 2 is this side length and half of this into 2y minus 2y upon x is equal to 2y. ये हमारा एरिया हो गया. ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे कि 2y से बाहर ले लो, हाफ 2x plus 2. ठीक है, 2y हमने बाहर ले लिया, तो ये बचा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2y. अब अगर आप देखोगे कि y से y कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया. ठीक है, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स. यहाँ भी आप अगर 2 बाहर ले लोगे तो अंदर बचेगा x प्लस 1. ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो गया. तो हमारे पास क्या इक्वेशन बच रही है, x प्लस 1 अपॉन इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1. ठीक है, अब ये आप लिख लोगे x प्लस 1 इंटू x minus 1 by x, that is equal to 1. So x square minus
1 x प्लस 1 है इस साइड लेफ्ट ब्रैकेट में, राइट ब्रैकेट में x माइनस 1. So x square minus 1 is equal to x, और we will get x square minus x minus 1 equals to 0. तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ऐसे. आई होप यू आर एबल टू सी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. राइट, अब हमें क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है x को. तो माइनस बी अपॉन, ये हमारा इक्वेशन सॉल्व करनी है, माइनस बी दैट इज 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, 1 प्लस 4 5 अपॉन 2. तो माइनस वाला नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी. तो वी विल टेक द पॉजिटिव वैल्यू विच विल बी 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2. रूट 5 प्लस 1 बाय 2 आ जाएगा आपका. ओके. अच्छा 2x है, देखो ये x की वैल्यू आई, वी नीड टू टेल 2x, सो दैट विल बी 1 प्लस रूट 5. ओके. सो टिपिकली जेड में ऐसे क्वेश्चन होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं. ओके, सो इट सेज अ ब्रोकरेज हाउस offers three stock portfolios. One consists of two blocks of common stock and one municipal bond. Four common stock, two municipal bonds, three blocks preferred stock. Okay, so it has P1, P2, and P3. So P1 has three stock. P1 has two blocks of common stock. Common stock 2 है. Okay, one municipal bond है. Portfolio 2 consists of four blocks of common stock, two municipal bonds, and three blocks of preferred stock. Preferred stock इसके 3 है. And portfolio 3 consists of two blocks of common stock, two municipal bonds, and three blocks of preferred stock. ठीक है. Customer wants 12 blocks of common stock, तो 12 common stocks चाहिए, 6 municipal bonds and 6 preferred stock. जैसे 12, 6 और 6 चाहिए. We are asked that how many portfolio 3 should be offered. तो बेसिकली आपको क्या करना है कि इनको तीनों को 12 बनाना है मिला के, इन्हें 6 बनाना है, राइट, एंड इसे बनाना है 6. So if you see, let's see if you make it 1 1. Okay, so 1 1 means 4. If you take 1 1 time, if you multiply it by 2, does it make sense? If you multiply by 2, you will get a total of, like if you multiply by 2, it will be 4 2 and so we are not able to make a total of 12, right? अगर आप 2 से multiply कर दोगे तो बन जाएगा 4, 4 plus 4 8, 8 plus 2 10 ही बनेगा, 12 नहीं हो पाएगा. ये दोनों तो फुलफिल हो जाएंगे. दैट मीन्स वी कैन नॉट टेक बोथ दीज, ये दोनों हम नहीं ले सकते हैं. ठीक है, इसमें से कोई एक लेना पड़ेगा. अगर हम 2 2 3 लेते हैं, ठीक है, 2 2 3 लेते हैं, हमें ये बनाना है 2 और 1, और ये हमें या तो दो लेने पड़ेंगे. अगर हम इसे दो ले लेते हैं तो वी विल मेक 4 4 6. ठीक है, अगर हमने P3 को दो ले लिया तो 4 4 6 हो गया. हमें 2 और 1 के रेशियो में चाहिए, तो हमें ये 2 चाहिए और 8 चाहिए, तो 2:1 में ये भी नहीं ले सकते. अगर हम P2 को, if we take P2 as, if we take P2 two times, that will give us 8 4 and 6. now we can buy 4 and 2. ठीक है, अगर हम P1 के दो ले लेंगे so that will make 4 and 2, so that will be 12 6 and 6. तो ये satisfy कर रहा है. ठीक है, P2 के 2 होने चाहिए, P1 के 2 होने चाहिए. that's how we can make it. ठीक है, बट यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं. ये पूछ रहा है portfolio 3, so portfolio 3 we do not have to take anything, so none of the other options. ठीक है, that will be the answer. Okay, next question. In a rainy season, Jamshedpur experienced some rain for 13 days. A morning rain was always followed by a clear evening. An evening rain was always preceded by a clear morning. A total of 9 mornings and 12 evenings were clear. How many rainless days uh, did Jamshedpur have in the period? Morning rain was followed by a clear evening. Okay? Morning, evening, और मॉर्निंग रेन वॉज ऑलवेज फॉलोड बाय क्लियर इवनिंग. अगर मॉर्निंग में रेन होगी तो इवनिंग में नहीं होगी. ठीक है,
इवनिंग रेन वॉज ऑलवेज प्रिसीडेड बाय अ क्लियर मॉर्निंग. सो इवनिंग में अगर रेन होगी वॉज ऑलवेज प्रिसीडेड बाय अ क्लियर मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में नहीं होगी. ठीक है, तो 9 मॉर्निंग्स में रेन हुई है और 12 इवनिंग्स में क्लियर थी. ठीक है, 9 मॉर्निंग्स में रेन हुई, 12 इवनिंग्स क्लियर थी. तो दैट मीन्स इट इज सेइंग दैट हाउ मेनी रेनलेस डेज. ठीक है, रेनलेस डेज पता लगाना है. तो 9 मॉर्निंग में ओके 9 मॉर्निंग्स वर क्लियर. ठीक है, 9 मॉर्निंग्स क्लियर है. दैट मीन्स 9 डेज इवनिंग में रेन हो सकती है. एंड 12 इवनिंग्स वर क्लियर. तो इवनिंग क्लियर कैसे होगी? हाँ, एक केस ये भी हो सकता है कि दोनों में हमारे कुछ भी रेन नहीं हुई. ठीक है, so that means these two add to, okay, so it is total 13 days. ठीक है, some rain for 13 days, total 13 days है. And out of this evening were clear in 12 evening clear थी और 9 morning clear थी. Okay, so total is 30. So we can say that if this is 9, so there will be 4 morning rains and 1 evening rain. So this is how we will have a total of 13. ठीक है, 4 मॉर्निंग रेन्स हो गई, सो दैट 9 मॉर्निंग्स आर क्लियर. एंड इवनिंग रेन 12 इवनिंग्स आर क्लियर, एक दिन इवनिंग में रेन होगी. सो हाउ मेनी रेनलेस डेज पूछा है. सो 5 डेज में रेन हुई है, तो 8 रेनलेस डेज. तो द आंसर विल बी रेनलेस डेज. 8 आंसर आना चाहिए. I'm getting 5 4 morning and 1 evening. 5 rainy days आ रहे हैं. 12 इवनिंग्स हुआ क्लियर. सो सिर्फ एक इवनिंग में रेन हुई है और मॉर्निंग में 4 रेन हुई है. तो 8 रेनलेस डेज होने चाहिए आइडियली. लेट्स पिक 5 11. I'll just mark it, although negative marking होती है, just नहीं करना चाहिए. Okay, so here's the next one. This looks to be an interesting question. I should definitely attempt it. So it says that the number in cell is adding the two numbers in the cells directly below it. ठीक है, तो यहाँ पे बनाते हैं 1 2 3 4 5 6. have 1 2 3 4 5 6 और फिर इसमें से 4 नंबर ऐड किए इसने. We get two numbers over here, and then something seems to be missing over here. Okay, so I think ये ऐसा होना चाहिए था कि 6 के 4 and 5 they put. Let's see. Y 4 5 2 x x. ठीक है, तो ये ने 9 लिखा है, that is 4 plus 5. This should be x plus 2. This is y plus 29 and this is 68. So that means this should be 9 only, and this should be x plus 2. So we will get y is equal to 30. ठीक है, अगर इनको ऐड करेंगे y plus 38 is 68, so y is equal to 30. Similarly, x plus 2 is equal to y plus 29. Right, so we can say that इसके अकॉर्डिंग तो x minus y हमारा 27 आ रहा है. They have done something, I don't know how they have taken 9. x minus y 27 आ रहा है इसमें तो.
adding 4 and 5. So this is x plus 2. Some seems to be some error in the question. ठीक है, अगर हम ये देखें x और 2 को ऐड करेंगे, if we add x into this question mark will be x plus 2 only, इन दोनों को ऐड करके, जैसे यहाँ इन्हें एग्जांपल में 9 दिया, this should be x plus 2 and this should be y plus 29 only, because we do not have any two numbers directly below it. इसके नीचे तो दो नंबर है ही नहीं, there is only one number over here. Either the grid is wrong or okay, so let's leave it. कभी हो सकता है कुछ errors भी हो सकते हैं question में. Okay, so it says fn(xn) is the number of ways of distributing x toys to n children so that each child receives at most 2 toys. ठीक है, f43 निकालना है. f43 means that there are 4 toys in 3 children, और इसमें मैक्स 2 टॉयज मिल सकते हैं. ठीक है, मैक्स 2 टॉयज एक चाइल्ड को दे सकते हैं. तो अब देखो 4 टॉयज 3 चिल्ड्रन में देने. एक तरीका तो ये है कि ईच चाइल्ड रिसीव्स एट मोस्ट 2 टॉयज. तो एक तरीका ये है कि वी गिव 2 टॉयज टू 2 चिल्ड्रन. ठीक है, 2 टॉयज दे दिए, 2 टॉयज दे दिए, राइट. 2 चिल्ड्रन को दिए, टोटल हमारे पास 3 चिल्ड्रन एंड वी हैव 4 टॉयज. तो इफ यू गिव 2 so that means first of all we will have to select those 2 children. So we will select 3C2, that in 3 ways we can distribute. ठीक है, 3 लोग हम select करना है 3 में से जिनको 2 मिलने चाहिए. If we choose 211 221 sorry 211, so in that case we have to select all children, so one way, and in 3 ways we can distribute the toys. ठीक है, तो इसको क्योंकि छोटा नंबर ऐसे मैनुअली काउंट करके भी देख सकते हैं. सपोज हमारे पास 4 टॉयज हैं, ठीक है, और हमें 3 चिल्ड्रन को देने. ठीक है, लेट अस से द पीपल आर ए बी सी. तो एक काम ऐसा कर सकते हैं कि हमने 2 चिल्ड्रन ए को 2 दे दिए, बी को 2 दे दिए. ठीक है, दूसरा हो सकता है कि हम ए को 2 दे दें, सी को 2 दे दें, सॉरी ए बी टू, ए टू सी टू, एंड थर्ड कुड बी दैट वी गिव 2 टू बी एंड 2 टू सी. ठीक है, और थर्ड चॉइस की होगी कि ए बी सी तीनों को हमने लिया और ए को 2 दिए, बी को 1 दिए. सो ए बी टू सी, देन थर्ड विल बी ए बी सी टू. ठीक है, तो हमारे पास टोटल 6 वेज हो गए. Okay, 4 digits of this number are omitted so that the result is as large as possible. ठीक है, हमें 4 digit omit करना है, so the result is as large as possible. ये logical problem है. See, we have 2913856 ये नंबर है. ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है, इसमें से 4 डिजिट रिमूव करना है. अब 4 डिजिट रिमूव करना है मींस हमारे पास कितना नंबर बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8. हमारे पास 4 डिजिट्स बचेंगे. तो हमें 4 डिजिट्स का मैक्स नंबर सोचना है. 4 डिजिट्स का मैक्स सोचना है, तो बेसिकली हम 9 को तो लेंगे ही लेंगे. ठीक है, 9 के बाद हम कोशिश करेंगे हम 8 को भी ले लें. छोटे छोटे डिजिट्स ओमिट कर लो. नाउ वी कैन टेक 9876. ऑब्वियसली लार्जेस्ट डिजिट जो ओमिट करेंगे वो है 5. हम इन सबको रिमूव कर देंगे, लाइक 2 वी विल रिमूव, 1 वी विल रिमूव, 3 वी विल रिमूव, 5 वी विल रिमूव. सो वी विल बी लेफ्ट विद 9876. तो 5 इज द लार्जेस्ट ओमिटेड डिजिट. तो कभी कभी कुछ क्वेश्चंस मुझे ये काफी इजी लग रहा है टिपिकली क्वेश्चंस स्टैंडर्ड से. ओके, Rajiv is a student in a business school. After every test, he calculates his cumulative average. QT and OB were his last 2 tests. नाउ ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन, अगर आपने पहले देखा हुआ है क्वेश्चन तो आपको इसका रिजल्ट भी पता होगा. अगर रिजल्ट नहीं पता तो हम इसे सॉल्व करते हैं. ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें सॉल्व करना चाहिए. ओके, सो लेट्स सी दिस. इट सेज दैट like 83 marks increased his average by 2 and 75 marks increases average by 1, and reasoning is the next test and he gets 51 in reasoning. His average will be what? So suppose let us say number of tests ले लेते हैं,
एंड यहाँ पे एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ टेस्ट इनटू एवरेज विल गिव अस द टोटल मार्क्स। तो अगर हमने जब बिफोर क्यूटी था, सपोज नंबर ऑफ टेस्ट x थे और एवरेज था y, सो टोटल विल बी एक्स वाई। अब नेक्स्ट टेस्ट कितना हो जाएगा, x+1 हो जाएंगे, ठीक है, एक और टेस्ट दे दिया। और एवरेज कितना हो गया, इंक्रीजेस बाय 2, सो y+2 हमारा एवरेज हो जाएगा। एंड हाउ मच डिड ही स्कोर, 83। तो पहले इसका टोटल ये था, अब इसने xy+83, ठीक है। फिर इसने एक और टेस्ट दिया, सो नंबर ऑफ टेस्ट विल बिकम x+2, राइट। एंड हिज एवरेज वाज इंक्रीज्ड फर्दर बाय 1, तो अब एवरेज हो गया y+3। और इस सब्जेक्ट में इसके कितने आए थे, 75 मार्क्स और आए थे, तो एक्स वाई प्लस इसमें 75 ऐड कर दो, 158। तो दिस इज द क्यूटी टेस्ट, दिस इज द ओबी टेस्ट। हमारे पास दो इक्वेशन बन गई एक्स एंड वाई में, इसे सॉल्व करते हैं, फिर हम थर्ड सब्जेक्ट निकाल देंगे और वी विल गेट द आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, तो नंबर ऑफ टेस्ट इनटू दिस x+1 इंटू y+2, तो xy plus 2x plus y plus 2, that is equal to xy plus 83। xy कैंसिल हो जाएगा, 2x plus y is equal to 81 आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी। सेकेंड इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी विल गेट xy plus 3y plus 3 into y, 3 into x, sorry, 3x, x into 3 and y into 2 plus 2y plus 6 is equal to xy plus 150, ठीक है। तो xy कैंसिल हो गया, 3x plus 2y आ गया 152। हमें कोई भी वेरिएबल एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वी विल गेट 4x plus 2y is equal to 162 and 3x plus 2y is equal to 152। सबट्रैक्ट कर लेंगे, वी विल गेट x, और ये तो कैंसिल हो जाएगा आपस में, इक्वल टू 10। सो नंबर ऑफ टेस्ट 10 हो गए, और यहाँ पे y रखना है, तो 30 plus 2y is 152, तो 30 into 122, that is 61, ठीक है। फिर इसने 11 टेस्ट दिए, तो इसका एवरेज हो गया 63, कि आप चाहे तो इसको वेरीफाई कर दे सकते हो। एंड देन 12 टेस्ट पे इसका एवरेज था 64, राइट। अब फाइनली क्या दिया, जो लास्ट टेस्ट है, जो रीजनिंग वाला टेस्ट है, ही गेट्स 51 इन रीजनिंग, ठीक है। तो इसने 51 मार्क्स आए, तो इसका एवरेज कितना होना चाहिए। देखो, इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, रीजनिंग में इसके टेस्ट हो जाएंगे 13 और इसके 51 मार्क्स आए, ठीक है। यहाँ पे इसके 51 मार्क्स आए। अब चाहे तो आप ऐसे देखो कि पहले एवरेज 64 था, 64 से 51 पे आ गया, दैट मीन्स 13 का ड्रॉप हुआ, ठीक है। और कितने टेस्ट दे दिए, 13, सो देयर विल बी अ ड्रॉप ऑफ 1 इन एवरेज, तो एवरेज विल बी 63। और अगर वैसे मैनुअली कैलकुलेट करना, वैसे भी आप कर सकते हो। यहाँ पे इसका था 64 इंटू 12, ठीक है, प्लस आप कर लोगे यहाँ पे 64 इंटू 12 प्लस में 51 मार्क्स है डिवाइडेड बाय 13, तो 64 इंटू 12 विल बी इक्वल टू 128, 768 plus 51 by 13, that is 819 by 13, 13 6 are 78, 339, yes answer will be 63। ये ऐसा क्वेश्चन एक पास्ट ईयर क्वेश्चन है किसी एग्जाम का, आई थिंक कैट में कभी आया हुआ था। ओके, फिर से अलजेब्रा आ गया, लेट्स स्किप इट फॉर नाउ। ओके, अगेन अलजेब्रा, टू मच अलजेब्रा इन दिस, और दो दो क्वेश्चन आए, तीन तीन क्वेश्चन आए हैं। ओके, लेट्स डू दिस डीआई सेट, वो पिछला वाला भी एक सॉर्ट ऑफ डीआई है। इट सेज दैट go through the following data carefully. It shows that units ordered is equal to sold plus ending inventory minus beginning inventory, ठीक है। sold plus, थ्री क्वेश्चंस पूछे, एरिया पर मंथ, सेल्स इन दिस, सेल्स दी हुई है, ओके सेल्स दी हुई है, ठीक है। What was the total a value of surcharge paid
of the surcharge paid, कुछ I think information missing है. Total value of surcharge paid, 14% of sales value. Okay. Rupees 1000. ओके, टोटल में 14% है, तो ये सारा ऐड करना पड़ेगा और उसका 14% निकालना पड़ेगा. कुछ आई थिंक कुछ तो डेटा मिसिंग लग रहा है. What I would instead do in this case is I will divide the like options by 14 and mark that as the answer. That's the way to do it. अभी तो मन में नहीं कर रहा, एक्चुअल एग्जाम होता तो I would have done it. 14 into 13 is 182. 22. That is divisible by this. 52 is 2 times. दिख रहा, so I'll just go with this option. Maybe it might be right. 10% of sale price of iPods and 20% of sales price of television contribute to the profits of. Okay, so ये तो कर लेते हैं. It says that it says 10% of iPods, 20% of television. टीवी में 20% मिलता है. Then it is saying that contribute to the profits. ठीक है, how much profit did company earn in the month of January from Bistupur and Kadma? January, Bistupur and Kadma से निकालना है in Jan. ठीक है, तो ये तो कैलकुलेशन बेस्ड है, ये टिपिकली हो जाएगा. सो जनवरी 990 का 20%, so I can do 99 into 2. Then this is 10%, 1575 plus, then it will be 6300 का. टेलीविजन का 20% है, so 1260 हो जाएगा और ये हो जाएगा 630. ये हमारा टोटल हो जाएगा. I see the options. Okay, options एस्टिमेट करके कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. लेट अस सी दिस. 198 and this is ये ऑप्शन मुझे सही नहीं दिख रहे हैं. ऑप्शंस 13 1 carries, 10 17 23 26 2 carries, 8 10 16 1 carry. 3663 is coming as the value. Okay, I'll go with this closest value. Order for this. Okay, I'll skip this question. It has extra data, so for now let's skip it. ये तो ये आपको देख के चलना है कि बहुत ज्यादा टायरिंग ना लगे. ठीक है, जहां जहां पे आपको लगे कि टायरिंग हो रहा है उसको छोड़ दो, बाद में कर सकते हो, क्योंकि काफी लंबा एग्जाम होता है. Let's now see the next one. It says that for each rupee in monthly advertising expenditure, they experience ₹6 increase in sale. तो 1 रुपये का एक्सपेंडिचर पे 6 की सेल इंक्रीज होती है. How much must they spend on advertising to attain 10 lakh in sales revenue for the month? So from first we can determine, because without advertisement they have given the revenue. तो और दिया है कि 1 रुपए की एक्सपेंस पे
₹6 की सेल इंक्रीज होती है, राइट? सो दे आर गिवन द प्रीवियस रेवेन्यू, वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस, isn't it? Then next is when Kumar and Co spends 15,000 on advertising, it earns 2,90,000 as sales revenue. So 15,000 on advertising, that also gives the same thing. Basically अगर हमें दिया है कि 2,90,000 लाइक इतना एडवर्टाइजिंग में कर रहा है, तो 2,90,000 सेल्स रेवेन्यू बन रहा है, तो बेसिकली वी कैन फाइंड आउट कि विदाउट एडवर्टाइजिंग कितना रेवेन्यू बन रहा है. तो ईदर स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन. बेसिकली दोनों सेम ही रिजल्ट देंगे, क्योंकि 15,000 एडवर्टाइजिंग में स्पेंड कर रहा है, इसका मतलब उनका 90,000 रेवेन्यू बन रहा है. 2,90,000 रेवेन्यू बन रहा है मीन्स 2 लाख उनका ऑलरेडी रेवेन्यू बनता है विदाउट एडवर्टाइजमेंट. सो ईदर स्टेटमेंट इज सफिशिएंट. Gitanjali Express is 250 meter long, crosses this bridge in 30 seconds while traveling from this. Speed पूछा है ट्रेन की, ठीक है, तो आपको निकालनी नहीं होती, just see. It says another train runs at 60 kilometer per hour. So when you want to find the uh, speed of the train, right? So speed of the train is basically, we have time, speed, distance. So we need to find the speed of the train. The bridge is constant, so distance is train plus bridge length. ठीक है, हमें train की length given है. Unless we know the distance of the length of bridge, we cannot tell the speed of the train. ठीक है, तो पहली इंफॉर्मेशन से हमें कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि हमें दूसरी ट्रेन के बारे में मेंशन्ड है, राइट? और वो कितने टाइम में कवर करती है. ठीक है, ब्रिज की लेंथ की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. Second information says Bombay Mail when running at 90 km per hour crosses a lamp post in 10 seconds. तो सेकंड से भी कुछ नहीं दिया. सेकंड हमें बॉम्बे मेल की लेंथ बता रहा है. ये बॉम्बे मेल की लेंथ बता रहा है, बट दैट इज नॉट रिलेटेड टू गीतांजलि एक्सप्रेस. बट व्हेन वी कंबाइन दीज टू, राइट, व्हेन वी कंबाइन 1 and 2, सो इट विल टेल अस बॉम्बे मेल की लेंथ पता चल जाएगी. ठीक है, बॉम्बे लेंथ की मेल की लेंथ तो सेकंड वाले से ही पता चल रही है. अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड को कंबाइन करेंगे, ब्रिज की जो लेंथ है वो हमें पता चल जाएगी. ओके, दिस इज हाउ यू सॉल्व डेटा सफिशिएंसी. आपको सॉल्व नहीं करना होता है, कैलकुलेट नहीं करना होता है, यू हैव टू यूज योर लॉजिक टू डिराइव द आंसर. एनमैट में काफी आते हैं, अगर आप एनमैट दे रहे हो तो उसमें चार चार क्वेश्चन तो आते ही हैं. ब्रिज की लेंथ पता चल गई, ट्रेन की लेंथ हमें गिवन है, ब्रिज की लेंथ पता चल जाएगी, वी कैन फाइंड द स्पीड. So both statements together are sufficient. Okay, so that's how you attempt data sufficiency. Okay, so I think ये, हाँ, ये वही ZAT सब PYPs देता है. ये मैंने अटेम्प्ट किया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में. शॉप सेल्स टू काइंड्स ऑफ रोल्स, एग रोल एंड मटन रोल. Onion, tomato, carrot, chili sauce, tomato sauce, any combination of choose a standard roll with no additional ingredients. ठीक है, subject to the following constraints. Tomato sauce is allowed only with an egg roll. It is not allowed on a mutton roll. You may have chili sauce only if you have onion or tomato or both. You cannot have chili sauce unless onion or tomato is selected. Okay, how many rolls can be ordered? So there is egg roll and mutton roll. Okay. अब देखो, एग रोल में टोमेटो सॉस इज अवेलेबल ओनली विद एन एग रोल. सो मटन में क्या है कि हमारे पास, और ये है टोमेटो, कैरेट, चिली सॉस, टोमेटो सॉस. ठीक है, ये हमारे पास चार इसमें सीजनिंग्स हैं, और अनियन भी है. अनियन, टोमेटो, कैरेट, चिली सॉस एंड टोमेटो सॉस, 5 ऑप्शंस हैं. ठीक है, तो अब देखो कि अगर हम मटन रोल मंगाते हैं, so in mutton roll we have you may have chili sauce only if you have onion or tomato or both. अनियन या टोमेटो तभी चिली सॉस डाल सकते हैं. We cannot have chili sauce unless onion or tomato is selected. तो अगर हम अनियन टोमेटो नहीं लेते हैं तो चिली सॉस नहीं सेलेक्ट कर सकते. अगर हमें सिर्फ एक वैरायटी सेलेक्ट करनी है, तो वी कैन सेलेक्ट अनियन, टोमेटो, कैरेट और टोमेटो सॉस. तो चार वेज हैं अगर हमें सिर्फ एक आइटम सेलेक्ट करना है इनमें से. ठीक है, अगर हमें दो आइटम सेलेक्ट करने हैं, तो वी कैन सेलेक्ट एनी टू आइटम्स, because we have to select any combination of two. Now chili sauce will not be selected in all scenarios. तो देखो, ऐसे आप काउंट कर सकते हो कि चिली सॉस के लिए एक रेस्ट्रिक्शन है, बाकी आप 4 में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर सकते हो, दैट इज 4C to 6. प्लस चिली सॉस के लिए हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, अनियन या टोमेटो के साथ. सो दो वेज हैं, अगर आप एक टॉपिंग सेलेक्ट करते हो, दो टॉपिंग सेलेक्ट करते हो. और क्या, टोमेटो सॉस इज अलाउड
ओनली विद एन एग रोल। ओके, तो इसमें चार ऑप्शंस थे, सॉरी थोड़ा और इसमें फिर से करते हैं। एग रोल, मटन रोल, देन वी हैव अनियन, टमाटो, कैरेट, चिली सॉस एंड टमाटो सॉस, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। और क्या दिया है कि टमाटो सॉस ओनली विद एन एग रोल, तो ये सिर्फ एग रोल में जाएगा। और ये चिली सॉस गोज विद टोमेटो और अनियन, ठीक है, मिनिमम टोमेटो और या अनियन चाहिए, ठीक है। तो पहला सिनेरियो लेते हैं कि अगर हम एक टॉपिंग लेते हैं, दो टॉपिंग लेते हैं, तीन टॉपिंग लेते हैं, चार टॉपिंग लेते हैं, पांच टॉपिंग लेते हैं, कितने वेज में हो सकती है। अगर मटन रोल में एक टॉपिंग डालेंगे, सो वी हैव थ्री वेज, बिकॉज वी कैनॉट यूज टोमेटो सॉस एंड चिली सॉस कैनॉट बी यूज विद एनीथिंग एल्स, सो थ्री वेज। अगर हमें दो टॉपिंग्स लेनी है, सो वी कैन पिक कॉम्बिनेशन ऑफ टू, लाइक अनियन टोमेटो, टोमेटो दिस, ठीक है, तीन वेज में ये कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं। चिली सॉस चाहिए तो हमारे पास दो वेज है, चिली सॉस इसके साथ यूज नहीं हो सकता, तो फाइव वेज, ठीक है। अगर तीन टॉपिंग चूज करनी है, तो वी कैन यूज फोर सी थ्री, फोर वेज में हो सकती है, बिकॉज वी हैव टू सेलेक्ट थ्री आइटम्स आउट ऑफ फोर, सो वी कैन चूज इन फोर वेज। And if you have to select all four, there is only one way, and we cannot choose all five toppings with mutton roll. तो 8 plus 5 13 भी इसमें हो सकता है। अगर एग रोल लेते हैं तो यहाँ पे फोर ऑप्शंस हो जाएंगे, इंक्लूडिंग टोमेटो सॉस, वन टू थ्री। अगर एग रोल में हमें दो ऑप्शंस चाहिए, सो वी कैन पिक एनी टू कॉम्बिनेशन आउट ऑफ फोर, तो फोर सी टू मीन्स हमारे पास सिक्स वेज होंगे। और ये जो क्या हमारे पास चिली सॉस है, ये दो में ही अवेलेबल होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा सिक्स प्लस टू, एट वेज में। अगर हम तीन चूज करते हैं, तीन चूज करते हैं, तो बेसिकली हमारे पास फाइव सी थ्री, टेन वेज होंगे। इसमें से एक वे होगा, इसमें हम ये सेलेक्ट कर रहे होंगे, ये और ये, तो ये पॉसिबल नहीं है। माइनस वन, टोटल नाइन वेज आएंगे। चार कोई भी सेलेक्ट करेंगे तो चिली सॉस अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा, फाइव सी वन, और ये फाइव वन वेज में। तो बहुत अच्छा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, इंडिविजुअली एक एक केस सेलेक्ट करना पड़ रहा है। तो 13 ये थे, 4 प्लस 8 इज 12, 12 प्लस 10 is 22, 27, so 27 plus 13, total there are 40 combinations to make the order, ठीक है। तो टिपिकल कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का काफी अच्छा क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला लग के लग जाएगा, आपको मैनुअली काउंट करना पड़ेगा। सो आंसर इज 40। तो दैट में ऐसी टायरिंग क्वेश्चंस रहते हैं। नाउ यू कैन सी दैट वी आर लेफ्ट विद अराउंड like 1 for 24 minutes. We have spent already 45 minutes, I guess, with explanation. Okay, तो ये तो ग्राफ ही नहीं दिख रहा। I would skip this question. Don't want to train my eyes on that. Okay. Like in examination, I'll obviously attempt it. Okay, Sangeeta and Swati bought two wrist watches at 11:40 a.m. AST. They bought them and discovered when 60 minutes elapsed on the correct clock, Sangeeta's watch registers 62 minutes and Swati's watch registers 56 minutes. Later the same day, Sangeeta's watch reads 10 p.m. ठीक है, तो 60 मिनट में 60 नॉर्मल टाइम है, वी हैव संगीता एंड स्वाति। तो स्वाति के उसमें 56 मिनट्स हो रहे हैं, संगीता के उसमें 62 हो रहे हैं। सो बेसिकली ये 2 मिनट आगे चल रही है, ये 4 मिनट पीछे चल रही है, ठीक है। दे वॉच्ड एट 10 11:40 में ली, और 10 पीएम किसके उसमें दिखा रहा है, संगीता के उसमें। तो 11:40 से 10 पीएम तक, 10 पीएम इसके उसमें दिखा रहा है, ठीक है। तो यहां से याद है, देखो करेक्ट, संगीता एंड स्वाति। Swati is showing 62, so this is 31 ratio 30 ratio 28, ये हमारे उसमें टाइम गैप होना चाहिए, ठीक है ना। 11:40 to 10 pm, मानी कि हम 12 आवर से 140 सब्ट्रैक्ट कर दो, 12 माइनस 140, तो यानी कि 10 hours and 20 minutes, 10 hour 20 minutes, 10 hour 20 minutes means 620 minutes। तो ये 620 मिनट्स संगीता के उसमें, और ये करेक्ट में 600 होने चाहिए, स्वाति के उसमें 560 मिनट्स होना चाहिए। 560 मिनट्स मीन्स 1 hour लेस, ठीक है। तो इसके उसमें अगर 10 पीएम दिखा रहा है, इसके उसमें 9 पीएम दिखाएगा, ठीक है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन मिल गया।
Can be used for Snap also. All right. I'll give in the Snap daily target to our students tomorrow. Company Valiance hosted a party of for 8 members of कंपनी AXL. इंटरेस्टिंग चीज इसमें अरिथमेटिक नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे. DI था, अलजेब्रा भर भर के थी, ज्योमेट्री भी थी, पर अरिथमेटिक नहीं दिखा मुझे. In the party, no member of XCL had interacted with more than 3 members of Valiance. Out of the members of Valiance, 3 members each interacted with 4 members of XCL, and the remaining members each interacted with 2 members of XCL. Greatest number of members. We'll avoid this question. Okay, let's see these two questions. Polynomial x cube plus px plus q has 3 distinct roots. Okay, then we need to find the possible value of p. So x cube plus px cube, 3 distinct रूट्स हैं. अब देखो क्या होता है कि 3 रूट्स होती हैं a b, लेट अस कॉल द रूट्स एज a b c. तो जो आपका सम ऑफ द रूट्स है वो माइनस सम ऑफ द रूट 0 है. कैसे? जैसे अगर हमारी इक्वेशन होती है जैसे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये इक्वेशन होती है. इसमें जो सम ऑफ द रूट्स होता है ये माइनस बी अपॉन ए होता है. देन सम ऑफ टू रूट्स एट अ टाइम, लेट अस से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, ठीक है, ऐसे करके जो होता है प्लस अल्फा गामा, दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए. और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है माइनस डी अपॉन ए. तो इस सिचुएशन में सम 0 है. सो लेट अस से द रूट्स आर ए बी सी. ये तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन में बता रहा हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज विद दीज ए बी सी. a plus b plus c is equal to 0. Sum of the roots is given as 0. Product of the roots is q. So abc is equal to q, and sum of two things taken at a time, right? So ab plus bc plus, sorry, abc is minus q, and ab plus bc plus ac is equal to p. ये हमें given condition है, and we are given that 3 distinct roots हैं. ठीक है, तो 3 distinct रूट्स हैं, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी 0 है. तो a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी ले लेते हैं. a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी. तो व्हाट वी कैन डू इज we can put ab plus c times of a plus b. a plus b is minus c. a plus b is minus c, right? तो sum 0 है, it means a plus b is minus c. So ab plus c times of a plus b we can put minus c. So ab minus c square, b minus c square. और बेसिकली ये भी लिख सकते हैं ना, उल्टा लिख लेते हैं, माइनस सी इज ए माइनस टाइम्स ऑफ ए प्लस बी. लेते हैं ए बी माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर. ये ए बी माइनस सी स्क्वायर जो भी लिखना चाहे. अगर यहाँ पे वैल्यूज रख के देखते हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं 2 1 3 स्क्वायर. अगर हम 1 और 0 रखते हैं, 1 इंटू 0 माइनस -1 एक वैल्यू आ रही है हमारी. 1 और 0 रखा, दो वैल्यूज ले ली, 1 और 0, और ये -1 आ गया. तो विल पुट दिस. ओके, सो वी आर गिवन सम फंक्शन. इसमें इंटरेस्टिंग कोई भी अरिथमेटिक नहीं था, बट ऐसा नहीं होता, एक्चुअल एग्जाम में अरिथमेटिक भी आता है. वी डिफाइन अ फंक्शन f x is equal to x upon 10 if it is divisible by 10. ठीक है, अगर मतलब 10 का मल्टीपल है तो 10 से डिवाइड करेंगे. एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इफ इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10. राइट, a0 is 1994, an plus 1 is fan.
an plus 1 is equal to f of an. Okay, so basically it means that a1 will be equal to f of a0. Okay, that is what it means. Then it is a2 will be equal to f of a1. Okay, a3 will be equal to f of a2 and so on, right? So this is how it goes. a0 is 1994 और कह रहा है कि fx is equal to, अगर ये divisible नहीं है तो 1 ऐड कर देंगे और 10 से divisible है तो 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है? तो ये a0 अगर हम 1994 पुट करेंगे, सो दिस विल बी 1995, ठीक है? ये 1995 हो गया। a2 हम लेंगे, फिर ऐड कर लेंगे 1996, ठीक है? a3 हमारा होगा 1997, राइट? अब देखो 4 होगा 98, 5 होगा 99 और 6 होगा 2000, ठीक है? देखो काफी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, काफी इजीली हो जाएगा, मतलब लग टफ रहा था। 4 यहाँ पे हो जाएगा, a5 हो जाएगा, ये a6 हो जाएगा, फिर क्या होगा, 10 से डिविजिबल है तो 10 से डिवाइड कर देंगे, राइट? a7 विल बी 200, a8 विल बी 20 और a9 विल बी 2। तो इनिशियली मुझे टफ लगा था, मैंने छोड़ दिया था, मतलब इसलिए छोड़ा था बिकॉज आई डोंट फील लाइक सॉल्विंग दीस अलजेब्रा क्वेश्चंस। तो a9 विल बी इक्वल टू 2, दैट विल बी द आंसर। Okay, so a9 is 2, so value of n is 9. Okay, so we have already spent a considerable amount of time, 1 hour, more than an hour, ठीक है? ये almost 1 hour। एक ये वाले क्वेश्चन देख लें जो 3 ऐसे फंक्शन बेस्ड थे, ये भी मैंने स्किप किया था। फंक्शन से काफी अलजेब्रा काफी पूछी है इसने। लेट अस सॉल्व दीस फंक्शन क्वेश्चंस, गुड फॉर your CAT exam as well. So it says 3 times of fx plus 2 plus 4 times of f1 upon x plus 2 is equal to 4x, x is not equal to 2. So we need to find f4, ठीक है? कभी भी ऐसा फंक्शन आए ना, तो इसको क्या करते हैं कि जो न्यूमरेटर है ना उसको डिनोमिनेटर से ऐसे रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे f x plus 2 को रिप्लेस कर लेंगे। तो what we will do is replace x plus 2 by 1 upon x plus 2, क्या? अब ये कर लेंगे, अब यहाँ पे रख लेंगे 3, या फिर एक काम एक और सिंपल तरीके से करते हैं, ठीक है? इसे कर लेते हैं, x plus 2 को हम रख देते हैं, सबसे पहले देखो इसको सब्स्टिट्यूशन से करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया जाता है। पहले हमें क्या कर लेंगे कि लेट x plus 2 इज इक्वल टू वाई, ठीक है? इसको एक सिंपल तरीके से करते हैं, x plus 2 को हम y पुट करेंगे, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y माइनस 2, x विल बी इक्वल टू y माइनस 2, ठीक है? ये हमने कर दिया। अब हमें क्या दिया भाई, 3 टाइम्स ऑफ f x plus 2, तो x plus 2 की जगह हम y रख लेंगे, 3 fy प्लस 4 टाइम्स ऑफ f 1 अपॉन y, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे 4x है, x है, y माइनस 2, so 4y माइनस 8, ठीक है? तो पहली इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन क्या बनाएंगे, रिप्लेस y बाय 1 अपॉन y, ठीक है? y और 1 अपॉन y को रिप्लेस कर देंगे, तो बन जाएगा 3 fy विल बिकम f ऑफ 1 अपॉन y प्लस 4 टाइम्स ऑफ fy, और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन y आ जाएगा 4 अपॉन y, ये सेकेंड इक्वेशन बन गई, ठीक है? अब हमें बेसिकली क्या करना है, हमें वेरिएबल निकालना है, ठीक है? रेसिप्रोकल हमें अवॉइड करना है, राइट? तो वी नीड टू रिमूव 1 अपॉन y, ठीक है? तो 1 अपॉन y रिमूव करना है, तो हमें क्या किस तरह से करना पड़ेगा कि we will multiply this equation by 3 and we will multiply this equation by 4, ठीक है? तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट दिस y 1 upon y portion gets reduced। तो ये हो जाएगा हमारा 9f of y प्लस 12 टाइम्स f 1 upon y, ठीक है? वैसे लिखना नहीं चाहिए पर यहाँ पे आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं लिख रहा हूँ। Now this is 4 times, that is 12 times of f
1 upon y plus 2 times 4 times is 16 f of y is equal to 4 times is 16 upon y minus 8. ये आ गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन का डिफरेंस ले लो, दिस गेट्स कैंसल्ड, और इससे इसको माइनस करो क्योंकि ये बड़ा वैल्यू है। 7 fy इज इक्वल टू 60, ये 8 है, ये सॉरी ये 32 होगा, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई होगा पूरा। तो 7 f of y इज इक्वल टू 16 अपॉन वाई, यहाँ पे आएगा 16 अपॉन वाई माइनस 12y, एंड माइनस 32 माइनस 24 इज -8, ठीक है। हमें क्या निकालना है, f(4) निकालना है, ठीक है। तो इस सारे को हम डिवाइड कर देंगे विद 7 टू गेट f(y). तो बेसिकली हमें क्या करना है, 16 अपॉन वाई माइनस 12y माइनस 8 को 7 से डिवाइड करना, दैट विल गिव अस f(y). तो f(y) निकालना है, यहाँ पे y हमें 4 रख देंगे, so that will be 4 minus 48 minus 8 upon 7, ये आ रहा है हमारा 56 minus 52/7, -52/7 आ रहा आंसर। तो I'll go with 52/7 because like हो सकता है हमने कहीं पे प्लस माइनस की गड़बड़ कर दी होगी। It will be 52/7, हो सकता है कहीं पे हमने सब्ट्रैक्शन में कोई मिस्टेक कर दी होगी, कुछ सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक हो सकती है। So it turns out to be 52/7, ठीक है, we'll choose this option। ये था एक, और DI था जो हमने ऐसे छोड़ दिया था। लेट अस सॉल्व दिस, क्योंकि बहुत सारे इक्वेशंस हैं। So let's here's the one, okay। So it says that A B C D E F are 6 positive integers, 4 integers हैं, और इससे 3 क्वेश्चन पूछे। We'll solve it। B C D E is equal to 4a, C plus F is equal to 3a, C D E is equal to 2f, F equal to 2d, and E plus F is equal to 2c plus 1, ठीक है। तो देखते हैं कितनी वेरिएबल्स हैं, 6 वेरिएबल्स हैं, और वी हैव 1 2 3 4 5 इक्वेशंस। ए इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 12 एंड 20, ठीक है। तो ए की हमें वैल्यू पता है, या तो 13 होगी या 17 होगी, ठीक है। चलो अब हम करते हैं, हमारे पास 6 इक्वेशंस है बेसिकली, 6 वेरिएबल्स और 6 इक्वेशंस वी कैन सॉल्व फॉर ए एंड बी, ठीक है। सो लेट्स सी दिस। पेपर अच्छा बनाया है इन्हें ओवरऑल, ठीक है, बस अरिथमेटिक मिसिंग है। And like you can also try our mocks also, which are uh, like which have interesting questions like these। ज्योमेट्री भी इसमें ज्यादा नहीं दिखी मुझे। okay, so A is 13 और 17, दो पॉसिबल वैल्यूज हैं। कहाँ से स्टार्ट करें, F is 2D, तो ये हो जाएगा 4D, तो C plus E will be 3D, C plus F is 3A, 5DB plus E plus F is 2C plus 1। F is 2D हमने यूज कर दिया तो C plus D plus E हमारा आ गया 4D, C plus E हमारा आ गया 3D, E plus F हमारा आ गया 3A, दैट इज ऑलरेडी गिवन टू अस। ये तीन इक्वेशन यूज कर ली। E plus F अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 2C plus E plus F, E plus F is 2C plus 1,
ए प्लस डी। अब ये ध्यान देना है कि देखो कुछ कुछ हिंट्स हमें ये लेनी पड़ेंगी। ये आ रहा है 4c+1, दिस इज इवन, दिस इज +1, दैट इज ऑड नंबर, तो ये ऑड होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। ए इज ऑड नंबर, सो ये ऑड होगा, सो डी शुड बी इवन नंबर। ये समझ में रखना है कि डी इज एन इवन नंबर, so f will be a multiple of 4, maybe that property we can use। और यहाँ पे हमें दिख रहा है c plus e is 3d, b plus 4d is equal to 4, b plus 4d, c plus e 3d है, 4d is equal to 4a। तो ये इवन होगा, ये भी इवन होगा, तो b इवन होना चाहिए, बट इससे कुछ ऐसे क्लिक नहीं हो रहा है। प्लस 4d इज इक्वल टू 4। अच्छा वो तो ऐसे ही हो जाता, c प्लस d प्लस e हमारा 2f इज इक्वल टू 4d, पहले से ही बन रहा था। तो एक काम करते, कुछ ABCD की वैल्यूज लेके कुछ हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये सारे हमारे पास कंडीशंस हैं। अगर A 13 रखते हैं तो दिस विल बी 52, E प्लस F हमारा आ जाएगा 39, E प्लस विल बी 3D, और D तो वैसे ही इवन है क्योंकि F टाइम्स ऑफ F है। If we are given 5 equations, ideally we should be able to solve for those, because six equations हो गई, A की वैल्यू 13 या 17 है। प्लस okay, we'll skip this question, I mean it's no point यहाँ पे कुछ आ गया है कि every single interruption due to one of the, अच्छा वहाँ पे टॉगल के चक्कर में इंटरप्शन आ गया है। ओके, so there is some interruption, it says I have to restart it। when I restart, what I'll do is I'll not attempt the test, मतलब attempt the quant section, will leave this। ठीक है, तो ये हमने कर लिया था। लेट्स सी इफ द क्वेश्चंस चेंज, द क्वेश्चंस रिमेन द सेम। ठीक है, तो ये सारे हमने सॉल्व कर लिए थे आइडेंटिकली, राइट। और इसमें कुछ कुछ एरर्स भी दिखे थे, सो वी हैव डन दीज क्वेश्चंस, विल नॉट स्विच नाउ। बेसिकली वी अटेम्प्टेड मोस्ट ऑफ दीज एक्सेप्ट अ फ्यू क्वेश्चंस, जैसे ये वाला DI नहीं किया था लास्ट में, जो छोटी सी टेबल थी, नॉट क्लियरली विजिबल, एंड I think few questions we skipped. Otherwise, we did most of the questions. Let us see the other sections. Okay. Of course, in the examination we cannot switch, right? So obviously, they must have created a similar interface कि ताकि कोई बच्चा ऐसे cheating ना कर पाए. Okay. All right. So let's now see this. Uh,
the other sections. Should we do decision making first or should we do VARC, VLR? बहुत ड्रेनिंग टेस्ट लगता है, like it consumes a lot of time. तो कौन सा सेक्शन करना चाहिए? Do let me know in the comments. Okay, so let's go with the DM section first. Let's see that what all DM questions they have given this time. Okay, so it says that Professor Vijay, the chairperson of the faculty academic committee, was trying to understand the implications of decisions taken by student placement committee on placement issues. It was alleged that Viswajit, the final year student, inflated his grades on his biodata that was sent to the recruiters. ठीक है, तो उसने अपना grade inflate कर दिया. President of SPC requested the FSC to debar Viswajit from the campus recruitment process. And the matter was brought up for discussion in FSC. One of the professors remarked that Viswajit too shall be allowed to defend himself. When Viswajit arrived for the meeting, one of the professors remarked that Viswajit too should be. The situation became even more challenging. Viswajit raised the issue that many other students who had misrepresented grades to get coveted jobs had gone scot-free. He alleged that these students were close to the president of SPC and therefore no action was taken against them. He stated that somebody had deliberately manipulated his grades in the biodata. This allegation confused the members and it was decided to adjourn the meeting. Vijaya was to decide on the next course of action. Okay. So basically what they did is एक बच्चा था उसने अपने ग्रेड्स इन्फ्लेट कर दिए थे. ठीक है, अब जब उसे मीटिंग के लिए बुलाया उसने कहा कि बाकी स्टूडेंट्स ने भी ग्रेड इन्फ्लेट किया और जो प्रेसिडेंट के क्लोज थे so they were not caught and he got caught and he is saying that he is innocent, right? So that is what they have mentioned over here. All right, so if you were Vijay, what in your opinion what would be the most appropriate action? Suspend Biswajit and the president of SPC. You cannot suspend the president. Okay. Acha, president of SPC is Student Placement Committee. Fine. Apprise the corporate recruiters for the situation and assure them that corrective actions will be taken. Going to the recruiters, debar Vishwajit and the president of SPC from the placement process as they have failed to uphold the rules of SPC. Sorry. Yeah, so we can debar from the placement because sorry. Constitute a fact-finding committee to investigate the matter and ask them to submit a report to you within a week's time. Now the thing is, his allegations are different. He's saying that basically, like he's saying that he is innocent, okay, and someone had forged it. So we will do the fact finding because we cannot simply go by one person's like statement, right? So ideally, we should have this thing that we will have a fact finding committee. That makes sense. It was found that a large section of the students have been indulging in such practices. Unfortunately, the HR manager of a much coveted campus recruiter, who is an alumnus of the college, came to know about this. Considering yourself in the position of HR manager, what would be your reaction? ठीक है, तो एक HR manager को पता चलता है कि इस तरह की activity हो रही है, so what should be the action done by the HR manager? So obviously, uh, like it's an unethical practice. Ask the SPC to resend the details including their verified grades, express your displeasure and stop any further recruitment from the college. Talk to your contact in the college and try to find out the truth. Do not change anything and continue the process. तो ये तो नहीं करेंगे. Ask the college to send a fresh set of biodata as you wanted verified grades of students. So you can ask for the fresh set of data. Then as a potential entrant, you are having informal Facebook chat with one of the college seniors. You wanted to know about the pay packages of the graduating students. Senior replied that one will be able to understand this only after joining the college. He did not reveal any information but suggested that it is not very difficult to get a high salary job as you have already started networking. He also cautioned that you should not believe in any rumors, that you should directly contact the student body for any further information. So that is what typically happens. Okay, so they are saying that
What will be your most appropriate choice for seeking further information about placements? Other Facebook friends to find out the placement activities at the college. Start networking with the HR managers. You will contact the college authorities to get more insights about the placement process. Conversation will increase your interest, and you will network with more with the students of the college for increasing your chances of getting a high salary job. You will try to contact the president of SPC, right? So typically, if you have to contact, like, you will not get the direct like detailed information. तो किसी भी आप कॉलेज के placement statistics देखते हो, so they don't give you the information. Okay, so you will have to resort to something like uh, और start networking with the HR managers. तो ये reason नहीं है, Facebook friends, college authorities. So you typically will, college authorities would be the most appropriate thing to do. Okay, so here's the next case study. It says that the head of a nation in a Nordic region was struggling with the slowing economy on one hand and restless citizens on the other. In addition, his opponents were doing everything possible to discredit his government. As a famous saying goes, there is no smoke without a fire. It cannot be said that the incumbent government was doing all the right things. There were reports of acts of omission and commission coming out every other day. So he was not doing well, and distribution of public resources for private businesses and for private consumption had created a lot of problems. It was being alleged that the government had given the right to exploit these public resources at throwaway prices to some private companies. Some of the citizens were questioning the government policies in the Supreme Court of the country as well as in the media. In the midst of all this, the head of the nation called his cabinet colleagues for a meeting on a recent happenings in the country. He asked his Minister of Water Resources about the bidding process for allocation of rights to set up mini hydel power plants. This, the minister replied that the ministry had followed laid out policies of the government. Water resources were allocated to these companies, and okay, so there was some bidding for water projects. Okay, now there is like corruption going on, and the resources allocated are not proper. That's what it says. Media reports suggested the Minister of Water Resources had deliberately allocated the water resources at old prices to the new companies, and in return, some received kickbacks. However, the minister denied these charges. His counter argument was that he followed the stated policies of the government. It is very difficult to price a scarce resource. He also said that the loss that the media is talking about is notional, and in reality, the government and the citizen have gained by the entry of new players. So basically, they are saying that the allocation is not proper, the bidding is not fair. So which of the following is the most appropriate inference? Uh, if it benefited to the citizens is higher than actual losses, then it is not unethical. If benefit to the citizens is higher than notional losses, then it is not unethical. Benefit to the citizens is lower than actual losses, then it is unethical. If benefit to the citizens is lower than the notional losses, so it is unethical when it is actual losses. So if the benefit to the citizens is less than the actual, see, notional losses is something that the government claims, ठीक है, तो वो जरूरी नहीं है वो सही के losses हो. So if the notional losses is irrelevant, the actual losses mean over here. So if the actual losses benefit to the people are less, so obviously then it is unethical.
Subsequently, the minister questioned on the role of the media in the whole affair. He said that the media cannot act like a reporter, prosecutor, and judge at the same time. Mr. Swamy, an independent observer, was asked about appropriateness of the minister's opinion. Okay, so what should he reply? Media has done the media has rightly accused the minister, wrongly accused the ministers, may be factually incorrect. Okay, so possible that may be factually incorrect. The media is media is independent, so possible that the minister, because it is given in the passage that they have been doing a lot of corrupt activities. Looking at the public unrest and discontent, the government's anti-corruption branch was entrusted with the task of investigating the matter. Within a week's time, the branch charge sheeted top corporate managers and the ministers of wrongdoings. Mr. Swamy was again asked to identify the guilty. Only the head of the nation, only the minister, only corporate managers. So it should be all of the above. They have put cases as good, but the options are not. I think they have created these fresh questions. That's what I believe. Ajay was thinking deeply about the problem that his organization, a business consulting company, faced. Globalization had affected his company like many other companies. Despite the downturn, the current revenues remained healthy. However, Ajay knew it was inevitable that the company could not do business in the same way. The complexity of managing the business had increased with the time. Consultants were under pressure to deliver good and innovative solutions. The organization had consultants from different age groups having good mix of domain and industry expertise. It was a flat organization with three levels. The biggest challenge for Ajay was to have consultants with the latest knowledge who would also earn revenues. Getting additional business was a challenge. Okay. So complexity increased. The consultants had to deliver better results and they could not hire new consultants, okay, because the existing consultants were easy, right? So that is the challenge, right? The task is getting challenging, but at the same time we are unable to hire new people. Okay? Some of the consultants were adept at applying old solutions to new problems. Ajay was not very sure if this would work for long. Some of the clients had complained about the performance of old and reputed consultants. Ajay was mulling over the following five solutions to tackle this problem. Okay, which of the following would be the best sequence decisions taken by Ajay, starting from the immediate to distant? ठीक है, immediate action सबसे पहले लेंगे. Support staff is a good action. Decrease the number of simultaneously projects. That is also a good one. Recruit more consultants. Immediate is the problem is hiring new consultants. Client so I think this should make sense. Recruit more consultants is one of the important things. Uh, this could also be possible one, decrease time spent on client interaction because they're not having time to do things, right? So if they uh, spend time for generating solutions, then recruit people. Support staff to बाद में लेंगे. So that makes these are tricky ones. I mean, this is what decision making is all tricky about. After Ajay implemented some of the steps mentioned above, consultants wanted to renegotiate their contract with the organization. It seems that the organization had never mentioned that consultants have to work across industries and domains. So industries and domains उसने apply किया.
Some of the old consultants were reluctant to change their ways, while many of the younger consultants were willing to follow his advice. Do nothing तो नहीं होगा. You cannot retrench old consultants. ये भी harsh action हो गया. You cannot pressurize non-conformists or negotiate and apply rules to new consultants. That makes win-win situation, right? Because new people are willing to work on multi-dimensional projects, right, across industries. तो अगर हम new consultants के लिए rule बनाए, old consultants के लिए नहीं बनाए, तो that will be a win-win situation for all. Ajay was to retire in 5 years and he wanted to leave behind a legacy. ठीक है. Most important to least important. Do nothing is least important. So do nothing तो लास्ट में आएगा. अच्छा वह चार ही चूज कर सकते हैं, ठीक है, वन चूज ही नहीं करना है, ठीक है. So we can rule out options. We are left with options 1 and 3. So 2, set the future direction for the organization in these challenging times. That is 1. Then 3 और 5 में से better choose कर लेते हैं. Benchmark performance with respect to the best consulting company in the industry. Makes sense. So let's put it on hold. 4 is saying that empower senior consultants and at the same time seek opinion of all others for handling future challenges and infuse fresh thinking by hiring outsiders. पहले बेंचमार्क बनाते हैं. आउटसाइडर्स तो हम बाद में हायर कर लेंगे, so maybe that is a part of that. Okay, second is the best one. Set future directions in these challenging times. Of course we have to remove one because do nothing is a passive action. तो इसके options relatively easy हो गए. Okay, so I'll read it. It was the end of performance review cycle for the year 2012 when you asked your subordinates about any problems they were facing. Natarajan told you that an important member of his team won the Rajan, who had also won the best performance award for the year. Okay, so performer of the year one Rajan is not taking interest. Okay, and Natarajan was not been able to solve this issue. Now you call that Vardarajan. So Natarajan is talking that like there is a person Vardarajan. Okay, so last year he was the performer of the year, but this year he is not having interest in his work. Okay, which of the following would be the most unlikely reason for Vardarajan's declining involvement? Okay, that is a plausible one. He was not promoted. He was uh, given best performance award but not promoted. Okay, so that is a possible reason. Did not find his work challenging enough. Given below are some steps that could be taken to motivate him. More challenging would most appropriate. More challenging work तो देना ही देना है. Transfer Vardarajan from projects department to training department. No, ये कोई sense नहीं बनाता. 2 हटा दो. So 134 or 14. Ask him to take a vacation for 2 months for the training decision. So 1 and 4 make sense. Vacation बहुत ज्यादा वैसा fancy हो गया. लगने में cool लगता है कि vacation पे भेज दो, but टेक्निकली ऐसा नहीं करते. ठीक है, वेकेशन पे भेज दो, ऐसा नहीं करेंगे. 2 months, वो भी 2 months is a very long time. Okay, wish like you were in some organization and they said you for 2 months because you were not having interest. That's a like very fairy tale thing, right? ऐसा नहीं होता.
ठीक है, वो लिंक्डइन की फेरी टेल स्टोरी नहीं है। ओके, सो उसको नई ट्रेनिंग दो और उसके अलावा मोर चैलेंजिंग असाइनमेंट दो। You overheard a conversation between Varatharajan and his colleague over an official dinner. He expressed his unhappiness about the fact that good performers were not given their due credit while poor performers were being promoted faster. तो उसका रीजन मेन वही था। If Varatharajan is right, which of the following steps would help in creating a better organization? Give another assignment, fire Varatharajan, give higher salary to Varatharajan, promote Varatharajan with immediate effect, ensure that performance is objectively and transparently assessed. ठीक है, तो performance ensure करना है क्योंकि वरदराजन एक इकलौता पर्सन है. There might be other people also in the company who are facing this issue, right? So we will ensure that performance is objectively and transparently assessed. ये हमें करना होगा. Okay, so next caselet, interesting caselets हैं. I hope you are enjoying these. It says Mr. Deepangshu Badua, a young IT professional, came early to office to assist his boss in the preparation of an important client presentation. When he switched onto his computer, he saw an email from Mr. Patel. ठीक है, तो he came to office and he saw this mail. The mail says, "Dear Mr. Barua, this email serves as a follow-up for my conversation with you on December this. I have already conveyed need for improvement in your behavior as desired by your project leader and colleagues. They are yet to notice and any visible improvements. I am apprehensive that your failure to act my warrant further action leading to dismissal. I will continue to monitor and assess your performance over the next 3 months to determine whether improvements meet the expectations. At the same time, I would like to reaffirm that you are very valuable for our organization." Right? So you got a mail from HR director. Okay, so which says that like your performance is not going good for the past few months and he will continue to monitor them for the next 3 months. ठीक है, तो basically एक warning है fire करने से पहले. Then it says, initially the email distracted Deepangshu, but he decided to focus on the job. Which of the following options might best explain his decision to do so? Why he should do it? Mr. Patel would soon be transferred to another department? No. 3 days back, Mr. Deepangshu had been assigned a new project similar to his final year. That is irrelevant. ठीक है, engineering project से तो कोई sense ही नहीं बन रहा. His friend has been hospitalized. Irrelevant thing. Failing to perform in the client meeting might further complicate things. New team in the same project. So failing to perform, ये performance failure चल रहा है. Option इनने easy दिए, caselet सही बनाया. The scheduled presentation went off smoothly. Back in his cabin, Deepangshu read Mr. Patel's email once more and pondered over it. During the last meeting, he tried to put forward his explanation, but Mr. Patel had not allowed him to speak. Hmm. Okay, so job offer था. Next 2 weeks में pick करना है to accept the offer. Okay, to reject the offer from the startup. Okay, Mr. Patel is not allowing him to speak. Better job, comparable salary. To resign, accept the offer with a request to give him 10% salary hike. So yeah, he can ask for hike from the company. Keep prospecting. Because he's not being valued at his company, right? So that is what we will go with. After a couple of weeks, Mr. Patel came to know that Deepangshu's project leader, Mr. John, very competitive senior, maybe willfully influenced his team members to file a wrong complaint against Mr. Deepangshu. Okay, so wrong complaint against it. Wrong complaint and he came to know that he is trying to look for another job. So we need to see that what are the actions and sequence of actions.
Talk to Mr. John about Dipanshu and convey to him that losing a bright employee would cost the organization dearly. So talk to करनी चाहिए. Okay. Catch up with Mr. John during coffee break and convey that Dipanshu has a good track record. Chat with Dipanshu during coffee break. Catch up with Dipanshu during the coffee break and convey that the organization values him. ये काफी tricky सा लग रहा है question. 1 and 4 makes sense. 1 4 5. नहीं, क्योंकि 1 4 में थोड़ा डिटेल दिया है. Like he's just Mr. John, he needs to talk, and fourth one, Dipanshu has to convey that the organization values him and arrange a meeting between all three of them. So that makes sense of uh, taking all stakeholders to account. Okay, so next thing it says that okay, ये तो उसमें आ चुका है. ये तो XAT का question है, right? Like these are three people interning for PPO, okay, and they are eager to convert their internship. So इन तीनों को PPO मिलने वाला है. तो they are in the second week of our 8 week internship. Amala realizes that the project requires inputs from subjects she studied in a third trimester. And during the third trimester, Amala was significantly distracted by an inter-college sports meet. So he should disclose the mentor. Okay. Shabnam is working on sales executive work-life balance, has collected the following details. Frequent meetings help strengthen relationship with key customers. Traveling has no effect on the personal lives of the sales executive as most of them are single. Travel enhances the financial health of the sales executive since their fixed salaries are low. Frequent travel has no significant impact. The sales executive have the autonomy to decide the frequency of their travel. Shabnam thinks that the frequency of travel is higher than required. Okay. No effect तो नहीं होगा. Okay, no effect because she thinks that it is more than required. So no effect वाले options हम हटा सकते हैं. 2 and 4, so 1 3 5 will be the one. And third person, the project is about understanding employee perception against HR policies, and she suggested by her mentor to interview only the good performers identified by his office because poor performance, he believes, usually creep against the policies. Vindhya should ignore her mentor's directive, collect data from all, but compile reports separately for the good performers and poor performers. Vindhya should report his recent. So HR head ko that is complaining you should not be doing. Okay, and another mentor भी गलत है. Only those identified by mentor but also collect information. So why the other colleagues are disgruntled. Vindhya should completely comply with her mentor's suggestion. So she should not completely comply. Compile reports separately. That would make sense. Okay, so because that will give us an objective output. Ki why people are happy with the organization or not happy with the organization. Then it is saying Rakesh, who's it from Dhanbad, worked in Jamshedpur. This is the pastor kai question. Like I have solved this, so I come across this question. Okay, so let's see the verbal ability section, like what is here in this. I mean, I won't feel like attempting it.
But let's see that how they have put one passage, two passages, then a short passage, then another short passage. So two long and two short passages. Then I think they have given another passage, basically summary of the passage, and then passage. I mean, they don't give these many passages. Okay, so we have a parajumble over here, and fill in the blanks, fill in the blanks. Then we have parajumble, parajumble. They have not given poem. Acha, they have given poem. But they have given too many passages. That is not the case. A poem से एक ही question है. Okay, so if we talk about this paper, I mean, this does not look like the complete ZAT pattern because decision making ठीक है उन्होंने past year के दे दिए. In fact, in your quant also they must have given past year questions, a lot of them. But the thing is, जो verbal है वो I guess इन्हें काफी ज्यादा passages दे दिए. इतने ज्यादा passages में नहीं आता. They have given 4, 5 passages and then 6 passages. इतने typically you have 4 passages. ठीक है, तो ये रहता है आपका. थोड़ा सा पैटर्न मुझे वियर्ड लग रहा है. ठीक है, लास्ट टाइम मैंने देखो 4 passages होते हैं. That is for 12 questions, like into 3. And then we have poem, which is 2 questions. So this is actually what ZAT pattern looks like. So 14 questions from this. Okay, then you have, apart from this, there are some 5, 6 CR questions. फिर होते हैं fill in the blanks, errors, okay, और parajumbles. So 14 plus around 20, then maybe 2, 3, 2, 3 of all these types. अगर इसका पैटर्न देखें, so they have put 18 तक तो आरसी चल रहे हैं इनके. 16, 17, 17 तक आरसी चल रहे हैं. आरसी के बाद इनने आरसी प्लस पोएम, दैट इज टोटल 14 क्वेश्चन. इनके 17 तो आरसी में दिए. फिर एक इनने पैराजंबल, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर्स और सीआर, ये काउंट कर लेते हैं. पैराजंबल 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स 2 and CR 1. Then parajumble another one. Then fill the argument again. CR another one. OM 1. A plus 1, that is, and that is we can. So CR can 4 दी, which is still fine. एरर स्पॉटिंग इज मिसिंग, जिसके 2 से 3 क्वेश्चन एक्चुअली आता है एग्जाम में. फिल इन द ब्लैंक्स के भी एक और ज्यादा हो सकता था. So I don't think that there is like exactly as per the pattern. ठीक, कुछ तो इसमें वेरिएशन लग रहा है. Let us solve some of the questions. पैराजम्बल्स वगैरह सॉल्व कर लेते हैं बिकॉज वो ऐसा है जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा. ये कैट में भी आता है. What does that mean? I'll call it teaching of words. I will call it ostensive teaching of words. 5 तो 3 के बाद बनेगा. 2, 3, 5, 2, 3, 5, 4, 1. या फिर 2 के what does this mean?
Well, it may mean various things. Let's see this one. I will call it ostensive teaching of words. I say it will form an important part of the training because it is true with human beings, not because I could imagine otherwise. But uh, this ostensive teaching of words can be said to establish an association between the word and the thing. तो ये sense बना रहा है. Okay, then, but what does this mean? And then it may mean various things. And then four looks like a conclusive one. The boss called him to inform that he won't be coming. तो पहला तो won't ही होगा. However, the employees did not take it easy as they knew it was his to give them a surprise. Then it should be won't be WONT by coming in and checking who was at work. Any employee once caught not working, then he would be required to won't expiate or expiate. Like this is a challenging one, तो इसमें तो meaning पता होना चाहिए. I guess it will be meaning. Unless you know the meaning, you will not be able to tackle this. When no one made any of the financial scandal while he was in the room, allusion will make first one. Allusion is something that mention of certain thing. There was a feeling of awe to the illusion. Allusion means to avoid something like of the legal authority. So that will be the order. Logical order. He may definition. T के बाद 5 आना चाहिए. 2 looks to be the starting one. Now one can ostensibly define a proper name, proper color, this. 5. We may suppose this, but it does not. Okay. So let's see that if they've given the answers also. Okay, so you just want to see कि इसमें calculator दिया हुआ है. Scientific calculator है. You can use that. And let's see the part 2. Okay, we cannot submit also. That is the issue. Okay, you cannot submit also this paper. Okay, so it is the typical interface. That interface थोड़ा सा इसमें यहाँ पे इनने जो आपका कैंची वाटर मार्क है वो काफी डार्क है. अदरवाइज लुक्स लाइक इसमें क्या क्या इश्यूज हैं बता देता हूँ. मतलब जो मुझे सिंस इट्स अ पास्ट ईयर पेपर लाइक दे हैव यूज्ड दैट. इसमें जो आरसीज हैं वो ज़्यादा दिए हैं मोर देन यूजुअल. तो अगर आप ये दे रहे हो तो कुछ एक चीज़ें देख लेना. मोर देन यूजुअल आरसीज आर गिवन हियर एंड नो अरिथमेटिक इन दिस.
Okay, and it was more on algebra. Algebra content was very high. ठीक है, ज्योमेट्री थी थोड़ी बहुत उसमें, मॉडर्न मैथ भी थी, आई थिंक नंबर्स पे भी कुछ कुछ क्वेश्चंस थे, बट अरिथमेटिक मिसिंग थी, विच इज नॉट द केस इन द एक्चुअल एग्जाम। एक्चुअल एग्जाम में आपके अराउंड 28 में से 3-4 क्वेश्चंस तो अरिथमेटिक के मिनिमम आते ही, 3-4-5 भी हो सकते हैं। तो ये थोड़ा मुझे मिसिंग लगा। बाकी डीएम तो एज यूजुअल था जैसे डीएम रहता है। डीएम के जो ऑप्शंस थे वो मुझे कुछ इजी लगे, कुछ शायद इनने फ्रेश बनाए हैं, ठीक है? किसी किसी में काफी स्ट्रेट ऑप्शंस थे, क्योंकि वो मुझे लग रहा है नए फ्रेश क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, कि वरना वैसे टिपिकली नहीं देखने को मिलते हैं। कुछ कुछ में थे सम डीएम क्वेश्चंस, कुछ इनने पीवाईक्यू उठाए तो वो तो एज इट इज है, बट कुछ में ऑप्शन स्ट्रेट दिए। एल्जेब्रा नो अरिथमेटिक वाज द रेड फ्लैग हियर। टिपिकली अरिथमेटिक होती है, 4-5 क्वेश्चंस तो मिनिमम आते हैं, ठीक है? उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, मे बी यू कैन हैव 5-6 क्वेश्चंस आल्सो ऑफ अरिथमेटिक। अलजेब्रा बहुत ज्यादा थी, लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन फंक्शंस, एंड देन the other thing is like RC was more than usual। इसमें एरर स्पॉटिंग के कोई क्वेश्चन नहीं थे, ये तो थोड़ा सा मतलब ठीक है, रिलेवेंट टाइप का है, बट नॉट एग्जैक्ट एट पार। सो लाइक स्लाइट डिफरेंट, राइट? बट या इट वाज अ गुड टेस्ट टू प्रैक्टिस। तो अगर आप जैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यू कैन टेक दिस, राइट? एंड वी आल्सो हैव जैट मॉक्स, ठीक है? तो यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन गिवन ओवर हियर। वी हैव 10 फुल लेंथ, ठीक है, प्लस 10 डिसीजन मेक 15 डिसीजन मेकिंग टेस्ट। तो अगर आप जैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो दैट विल बी अ गुड प्रैक्टिस सोर्स। सो 10 फुल में जो आपका QADI है उसमें वीडियो सॉल्यूशंस है। So our 3 mocks are already live. We'll make like by CAT we will have 6 or 7 live, and uh, next month by mid of December we will be done with these mocks also. Okay, so you can try our mocks and practice well for ZAT. तो अभी तो मोस्टली ZAT एस्पिरेंट्स, फ्रेश एस्पिरेंट्स कम होते हैं, ठीक है? कैट के बाद ही देते हैं, कैट के बाद ही लोग टिपिकली ZAT की प्रिपरेशन करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर ZAT। आई टुक दिस मॉक, I mean did not complete it though. I took the QA section and the DM section almost done. VRC did not feel like reading the passages, not in the mood. But yeah, uh, the paper looks fine, right? Practice wise good है, या आप इसको try कर सकते हो। And there is no submit button also, so I do not want to wait for another 2 hours because कुछ बीच में वो issue हो गया था, की वजह से मैं इसे नहीं दे पाया था, right? I took some like initially वो जो रफ जो सोल्यूशन में कर रहा था उसमें दे हॉल्टेड माय पेपर, सो उन्होंने कहा कि आपको फिर से पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। देन आई लॉस्ट इंटरेस्ट, अदरवाइज आई वुड हैव कंप्लीटेड द एंटायर पेपर, ठीक है? बट फिर उसके बाद मन नहीं किया, बिकॉज कुछ स्विचिंग द विंडोज, दे हैव सम इशू विद दैट। Okay, so quant I found, अगर आपने वीडियोस स्टार्टिंग से देखा तो क्वांट के हमने मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, है? और अच्छे क्वेश्चंस थे मोस्टली। इसमें अलजेब्रा दिख रही है मुझे, काफी अलजेब्रा है, बहुत सारी, एटलीस्ट 7-8 क्वेश्चंस अलजेब्रा के हैं, फंक्शंस एंड ऑल दीज वैल्यूज। बट इतना नहीं होता, इतना ज्यादा अलजेब्रा भी नहीं आती। अरिथमेटिक वाज नॉट प्रेजेंट देयर, तो अरिथमेटिक भी आती है इसमें, और नंबर्स पे भी कुछ क्वेश्चंस थे, और कुछ कुछ क्वेश्चंस मुझे गलत भी लगे, जैसे ये वाला मुझे कुछ गड़बड़ लगा। एंड yeah, so that is about this test. Right, so if you have taken the mock, I am not sure that if they give the scores also when you submit, so try submitting it, and if you it is just a practice thing, right? बहुत जो भी इंस्टीट्यूट के मुझे मॉक्स दिखते हैं बहुत अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है? स्नैप भी ऐसी फर्जी से मॉक्स बनाता है, बट द थिंग इज आपको एक आइडिया आ जाता है 3 घंटे कैसे बैठना होता है और किस तरह के क्वेश्चन है। द लेवल ऑफ क्वेश्चन इज गुड, इट्स नॉट की क्वेश्चन आर बैड, इट्स गुड, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू विल फील। बट हाँ, थोड़ा सा है कि अरिथमेटिक भी आती है, तो डोंट फील कि अरिथमेटिक बिल्कुल नहीं आती, अरिथमेटिक से भी क्वेश्चंस आपके एग्जैक्ट में आते हैं। Okay, so yeah, so I'm turning it off, and thank you for watching this video. And yeah, we'll be coming up with more videos on that very soon. So we have some past year solutions also, to kuch और solutions 25 का solution, plus some sessions on that post cat. So stay tuned and do subscribe to our channel for the same.